नमस्कार, एमएच1 प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा और आज एक बार फिर हाजिर हैं हम एक ऐसी बेहतरीन चर्चा, एक ऐसा बेहतरीन डिस्कशन लेकर जो आपके और हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। फायदेमंद इसलिए क्योंकि वो आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है, हमारे परिवार से जुड़ा होता है, हमारे समाज से जुड़ा होता है, यानी ऐसा डिस्कशन जो आपकी और हमारी बातें हैं। तो चलिए, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बेहद अहम इसलिए है क्योंकि एक तो दिन ऐसा है, रविवार है, परिवार के सारे लोग एक साथ होते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे शो के जरिए आप अपने परिवार के साथ प्रेम को और ज्यादा मजबूत करें, क्योंकि आज का ये हमारा एपिसोड जॉइंट फैमिली पर है। जी हाँ, जॉइंट फैमिली यानी ऐसा परिवार जहां परिवार के सारे सदस्य एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं। क्या वैल्यू है उनकी, कितना जरूरी है जॉइंट फैमिली का होना बदलते समय के साथ, जहां एक तरफ एकल परिवारों का या यूं कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कितना मायने रखता है जॉइंट फैमिली, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। नुकसान तो खैर मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि भारत एक ऐसी धरती है जहां पर सभी लोग एक साथ रहते हैं, अतिथि देवो भव की परंपरा है और सभी परिवार एक साथ खुश रहते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैरिएला ज़ैनोलेट्टी। मैरिएला वैसे तो सिस्टमिक साइकोथेरेपिस्ट हैं। वो आज हमें ये बताएंगी कि जब हम परिवार के सदस्य आपस में रहते हैं, साथ रहते हैं, तो किस तरह की सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ता है, कितना पॉजिटिव है और क्या मायने हैं उस सपोर्ट के जो फैमिली हमें देती है। चलिए स्वागत करते हैं मैरिएला का। मैरिएला, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय खुशबू, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। ओह ग्रेट, आई एम इम्प्रूविंग। दैट्स वेरी नाइस। और हर शो के साथ साथ मैरिएला की हिंदी जो है वो भी इम्प्रूव होती जा रही है और हमारी कोशिश यही है कि वो हमें अपनी जिंदगी के अनुभव बताएं और हम यहाँ बैठकर आपकी और हमारी भाषा उन्हें सिखाएं। तो मैरिएला, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली आज हमारा जैसा कि विषय है, बट देयर इज अ कंफ्यूजन इन माय माइंड। जॉइंट फैमिली, it's a very common word in India, and you're from Italy, so I am so much, confused to ask. Are you the right person to ask this question? Do you know anything about joint family, or what to say? Seriously, do you know anything about joint family? What is it? So yes, you're right. I don't come from India, but I've been here for 9 years, and majority of my clients are actually Indians, and lots of them from joint families. Either now they are in joint families or they were brought up in a joint family. And on a personal level, my grandfather, it was the first one of 9 brothers and sisters. Oh. And yes, really? And they were living in a joint families, because joint family was also an institution many years back in Italy. And then my aunt, the eldest sister of my brother, was born in a joint family. Okay. And she tells me still stories about that time and the hardship they went through, but also the joy of sharing. And now all these brothers and sisters and their children, they had children. So now it's a huge community in the same area, not living together as sharing the house, but maybe different houses or different apartments, but in the same area. So I have some personal and professional experience in the matter. That is very wonderful. और ऐसा नहीं कि मैरिएला it's only with you. ये हम लोगों के साथ भी है कि if we are in joint family, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि हम एक छत के नीचे और इन अ सेम होम हम रह रहे हैं। सो इट्स लाइक के हमारा घर यहाँ है, चाचा जी का घर बराबर में है, अनदर अंकल उसके बराबर में रहते हैं। इट्स ऑल्सो लाइक अ जॉइंट फैमिली, एंड इट्स वेरी गुड टू हियर योर एक्सपीरियंस कि आप इटली से होने के बावजूद भी उस वैल्यू को समझती हैं। यू सीरियसली अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली, एंड दैट इज सीरियसली वंडरफुल। Yes, but I have to say something that sometimes people, they think, oh, joint family, because they are living in a joint family, but then it depends. I'm sure you've also understood and you've also experienced how different joint family do family and relationship in a different way. So it's not just about the joint family is the meaning that each individual is attached to it, and the different system of joint families, the experience of the people, it can be different. So
But that is very nice. I mean, it seriously looks good और sounds good. अच्छा लगता है सुन के जब हमारे भारत की तरह, हमारे देश की तरह बाहर के लोग जो दूसरी कंट्री से ताल्लुक रखते हैं वो भी प्रेज करते हैं, उनको भी इस तरह की वैल्यूज अच्छी लगती हैं. बहुत अच्छा लगता है और बहुत पॉजिटिव लगता है ये सुनकर. सो मैरिएला, आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को. एंड आई नीड टू नो वन क्वेश्चन ऑल्सो, एज देयर इज अ फैमिली, जॉइंट फैमिली. सो with a big family, pressure is also big. I mean, sometimes mental pressure increases all the time with the, members of the family. How to cope up with that? Yes. Relationships are always very complex, and especially if you have many people in the house, it's not so easy. I believe it's important to differentiate and to pay attention. Is actually the stress due to other family members or is your own stress? So be in touch with whatever is happening inside you and also measure the level of stress. Then of course sometimes stressful situation happen in relationship and you should not act immediately. You should take some time, maybe remove yourself from the situation and then go back and have a discussion. As you know, when you are upset or angry, you say things that you really don't want to say and then you regret. So it's better to take some time, pause and then come back. But it's also very important to tell the other person, when are you gonna come back? When is the discussion gonna happen? Don't just abandon the other person. And then, as I was saying before, look inside you. It's important. Develop a sense of self. So where am I? Where is my level of stress? How am I contributing to the situation? And it's not important, it's not necessary always to agree. It doesn't mean that you understand what the other person is saying if you agree. You can disagree, but at the same time have a cordial relationship and a cordial discussion. And be aware of what you cannot control. If you cannot control something, you just have to accept it. And maybe it's better to accept it than resist to that and then create all the negative feelings, which then will come out in some other situation. And another important bit is to create a personal space. So find a space, maybe your room, maybe, maybe a chair, maybe, I don't know, a coffee place where you can go and you can distress, or you can take some time to be by yourself, to ground yourself, to be in touch with whatever is inside you, and then take care of it. Yes. ये बहुत मायने रखती है ये बात कि अगर आप परेशान हैं, मैरिएला ने भी यही कहा, तो घर के सदस्यों से बात कीजिए, क्योंकि जॉइंट फैमिली का मतलब ही यही है. अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी है, कोई परेशानी है, कहीं फंसे हुए हैं, कोई तनाव है, परिवार के लोगों से बात कीजिए. माहौल देखिए घर का, कहीं आपकी वजह से नेगेटिव तो नहीं हो रहा है. ऐसे में कोशिश कीजिए जो परिवार में सबसे करीब है आपके, आप उससे बात कीजिए, और ये चीजें आपके रिलेशनशिप को भी बेटर करेंगी और आपके स्ट्रेस को भी कम करेंगी. तो मैरिएला तो यहाँ हमें बता ही रही हैं, लेकिन एक सवाल और है जो आमतौर पर आप और हम, या क्योंकि हमारे गांव में आज भी जॉइंट फैमिली का कल्चर है, इन सिटीज देयर इज not joint family, most of the joint families there is not in cities, because we are going to the nuclear family in cities, in big cities. So when in a joint family, if we are talking about lots of people, as I am in charge of a joint family, so responsibility of the members, family members, is making me irritated. Why? You have to keep in mind, Khushbu, people really like to have responsibility, to take up responsibility. There is a sense of control, sense of power. Of course, when the responsibilities then are too much, then that can bring in stress.
stress in people's life. And of course, the stress can have an impact on our respiratory system, on the metabolism. And you know, lots of people say, oh, I have a slow metabolism, I cannot lose weight. I hear this very often. Yes. But maybe it's also because you're taking up too many responsibilities, and that can lead to stress or high blood pressure. So taking up responsibility can be good, but also be careful of the side effects and delegate. It's not that, or do it in a, how do I say, in a collaborative manner. It doesn't have to be just one person taking up all the responsibilities. Initially, as I said, it can be a, you know, kind of a nice place where to be. You have the control, but then you also pay a price for it. So be careful. Seriously, this is very wonderful. और बहुत अच्छी बात हमेशा हर टॉपिक में मैरियला हमें ये बताती हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि वो साइकोथेरेपिस्ट हैं, वो जानती हैं लोगों के दिल की बात को पढ़ना जानती हैं, वो लोगों के मन के बात को समझती हैं, और इसलिए शायद वो हमें ये कहना चाहती हैं, हमें ये बता रही हैं, जिसे हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए कि जॉइंट फैमिली के अलग मायने हैं, उसे समझिए, वक्त दीजिए, जिम्मेदारियां अगर हैं तो मिल बांट कर अपने परिवार को आगे लेकर चलिए। मैरियला, देयर इज अ क्वेश्चन, हम जब ये पैंडेमिक चल रहा है सभी के लिए, वेयर इज पैंडेमिक एंड एवरीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम द मेंटल हेल्थ, जॉइंट फैमिली ऐसे में सपोर्टिव होती है तो कितना मायने रखती है? आई मीन in the pandemic, during the pandemic, everybody is suffering from the mental situation, stress, anxiety. Yes, stress, yeah, basically. So the support of a joint family, how it matters? Yes, families plays a huge role, family members, in supporting, but also in identifying. Sometimes the person who's struggling is not aware. So it's good to have family members around who can point that out and help you to seek support when needed. Plus the family can give the support apart from the professionals, the family members, even though sometimes family members, because they're not professionally trained, they can bring in more stress. So it will be nice for family members, if they're dealing for a long time with somebody dealing with mental health issues, to have some support themselves. I see family members sometimes with the person struggling. I see them all together in my office, and I help them with strategies on how to cope and what to do given the specific situation. Of course, there are things which are general, like be there for the person, listen, encourage or motivate, but sometimes people need to be guided because they don't know how much to support or how much to motivate. If somebody is depressed and you keep on pushing and tell the person to do, I don't know, to go out, to go for a walk or to do different things, you might get the opposite result. So it's important to know how, as family member, how and what to do to support, because it can also go on the other way and increase the stress level of the person who's struggling, but also having a huge impact on your own well-being. So family, very important, especially in India. As you know, there are lack of mental health professionals. So it's very important, but it needs to be done in a proper manner. And as I said, I see lots of people in my office who are then struggling themselves with anxiety and depression because they are sucked in wanting to help the other person. Of course, the intention are very good, but sometimes the outcome is not what is desired. Yes. So this Samji? Yeah. Yes. Khushbu? मैं समझी, यस। आई होप हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे, बिकॉज मैरियला बहुत अच्छे से हमें समझा रही हैं कि जॉइंट फैमिली बेहद ज़रूरी है, और अगर है तो कोशिश कीजिए, भले ही आप साथ नहीं हैं लेकिन रिश्तों को निभाने की कोशिश कीजिए। बेसिक पॉइंट यही है जो मैरियला में कहना चाह रही हैं। मैरियला, दिस माइट बी माई लास्ट क्वेश्चन. Have you ever been to any Indian function or any marriage or anything that is related to joint family? Balle thing. Yeah. The same thing I'm going to ask. So I was learning Bhangra.
I took some Bhangra classes. So. That is very wonderful. और I think this is the charm of India, of joint families. जब आप शादियों में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, get together होता है, and there are lots of family members in the family, and they are doing Bhangra, or they are dancing, they are having fun. So it sounds or it looks wonderful. How do you find it? I think, is it happen? But more than in how, Italy? You know what? It doesn't. I don't think that you can only have fun when you live together. I strongly believe in safe distance. So sometimes you can be very close to your family members without actually being physically too close. It's always about finding the right distance. Even in the joint families, I said before, you need your own space. You need your own, how do I say, your own boundaries. And boundaries don't mean that you are pushing people away. It means that you want to protect yourself and protect others. So it doesn't matter if you live on in the same space or not. The important is the quality of relationship. Wonderful. You want to have healthy relationship, and you need to know what healthy relationship means. तो इसके लिए भी हम आपसे बात कर ही रहे हैं. बहुत बहुत अच्छा डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन के साथ मैरिएला ने आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुई, और हम बहुत शुक्रिया उनका इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि हालांकि हमारे भारत में जॉइंट फैमिली का कल्चर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे दिल से, दिमाग से वो चीज़ें बाहर हो रही हैं. समझिए, रिश्तों की अहमियत को समझिए, अपने रिश्तों को मजबूत रखिए, दूर रहिए या पास रहिए, लेकिन मिठास रखिए अपने रिश्तों में, रिश्तों को मजबूत रखिए. फिर देखिए जिंदगी कितनी आसान हो जाती है, जिंदगी जीना कितना अच्छा हो जाता है. तो मैरिएला, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो. बहुत बहुत शुक्रिया. और आप सभी भी एंजॉय कीजिए हमारे इस शो के साथ. खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. दीजिए इजाजत. नमस्कार.